Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope all of you are fine, and I hope you must have kept yourselves indoors to get rid from this deadly virus. So, this is our third day, and the topic which we were reading was "For God's sake, hold thy tongue." And we have finished that lesson, and today we have to write the questions. But before going on to today's topic, let me recapitulate what we have read so far. I must say, let me add something extra to it. Dear students, you see, the main motive, the moral of the lesson was backbiting. How has backbiting been condemned in all religions? Especially in our Islam, backbiting has been condemned, and we read what our Prophet, peace be upon him, has said about backbiting. Not only Prophet, peace be upon him, but Allah subhanahu wa ta'ala has also revealed it in Quran. So, dear students, this was not only a story for us. Being a Muslim, we must consider it as a lesson. We must confine this lesson in our daily lives. Because in the beginning of the lesson, I told you that we indulge ourselves in many sins. We indulge our hands, our ears, our eyes as well in these criminal, I must say, in these sinful activities. So if we remember this lesson, if we adopt this lesson in our lives, this is really a fruitful for all of us. If we create a gap, if we consider that backbiting has been strongly condemned in our religion, we must not indulge ourselves in it. That means we will protect ourselves, we will protect our tongue from being confined to sin. So, I hope you will adopt it. I hope you will remember this lesson throughout your lives. And not only you, but all of us being a Muslim. क्योंकि नमाज पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, नमाज पढ़ना ही मुसलमान होना नहीं है। नमाज के साथ साथ बाकी जो मामलात है, ये बैकबाइटिंग भी हमारे इन मामलात में आ जाता है। सो हमें अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाना है। खैर, इंशाल्लाह आई होप कि आप इस लेसन को याद रखोगे। तो अब हमारा जो आज का जो टॉपिक है, वो हमें कुछ वर्किंग विद द टेक्स्ट जो है, जो क्वेश्चन हमें करने हैं आज, तो वो है, जो क्वेश्चन इसका पहला है, व्हाट डू द कुरान एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टेल अस ऑन बैकबाइटिंग एंड स्कैम। जो एक क्वेश्चन कह रहा है मैं कि कुरान और प्रॉफिट पीस अपॉन हिम क्या कहता है बैकबाइटिंग के बारे में। देखिए, आवर सेक्रेड होली कुरान कंडेम्स स्कैंडल मॉन्गरिंग एंड बैकबाइटिंग इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। In Sahih Muslim, our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, says that a person who indulges in backbiting is a man who has eaten the flesh of it. ये आपने we have read it before. हमने पहले लेसन में भी पढ़ा है कि कुरान में भी इसको स्ट्रांगली कंडेम किया गया है। तो इसका यही है कुरान। और दूसरा, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम क्या कहता था, वही जो हमने सिमिलिट्यूड या आई मस्ट से सिमिलरिटी ऑफ ए पर्सन who indulges in backbiting is to a person who eats the flesh of his dead brother. This is the answer of this first question. Write down this. तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द गीता एंड द बाइबल टेल अस। गीता और बैकबाइटिंग, गीता और बाइबल क्या कह रहा है। बाइबल में हमने कहा था, जो इंसान स्टम्बल ना हो जाए, जो इंसान अपने आप को इंक्लूड ना करे, वन हु डज नॉट इंडल्ज, वन हु डज नॉट इंक्लूड हिमसेल्फ इन सच एरर्स, ही इज ए परफेक्ट मैन, वही परफेक्ट है। और गीता में क्या कह रहे थे, जिस इंसान को अल्लाह का, जिस इंसान को से हिंदुइज्म में कह सकते हैं भगवान का जिस इंसान को खौफ होगा, वही इंसान अपने आप को गुनाहों से दूर रख सकता है, वही इंसान अपने आप को बैकबाइटिंग से दूर रख सकता है। तो लेट्स सी आंसर क्या है इसका।
गीता says that a person who is free from backbiting is pure and free from fear. वो इंसान जो अपने आप को आजाद रखता है बैकबाइटिंग से वही इंसान पाक है, और वो इंसान जिसके दिल में डर होगा, अगर मैंने if I indulge myself in backbiting, I will be considered as an evil. मुझे evil माना जाएगा, मुझे गुनहगार माना जाएगा. And the Bible says that we will make error. We all make errors in many ways, and a person who does not make an error is a perfect man. ये कह रहा है कि हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन वो इंसान, हम में से भी कोई ऐसा इंसान होगा जो गलतियां ना करे, वही परफेक्ट मैन है. And he can curb his whole, he can curb, और यहाँ पर on नहीं होगा, यहाँ पर his होगा. He can curb his whole body on his will. वो अपने सारे जिस्म के हर एक पार्ट को अपनी मर्जी के साथ कर्व कर सकता है, अपनी मर्जी के साथ चला सकता है. That is what a perfect man should be. This was question number 2. And the question number 3 is, what do the Granth Sahib and Lord Buddha? हाँ, अब बोल रहा है ग्रंथ साहिब और लॉर्ड बुद्धा क्या. हमने we have read it before. ग्रंथ साहिब क्या कह रहा था? ग्रंथ साहिब और जो ये बैग बाइटर है, सिमिलरिटी किसके साथ? ये उस इंसान के साथ इसकी कंपैरिजन करता था who carries the load of others without payment. ये ग्रंथ साहिब. दूसरा जो ये लॉर्ड बुद्धा अपने इस 8-fold पाथ में कह रहा है कि वो इंसान जो बैग बाइटिंग में इंडल्ज होता है, या वो उसकी एक लेसन थी कि we must follow the path of truth. हमें सच का रास्ता अपनाना चाहिए. हमें हमेशा अपनी जिंदगी की जो बुनियाद है वो सच पे होनी चाहिए. देखिए, ग्रंथ साहिब says that a backbiter carries the great burden of sinners. वो जो ये बैकबाइटर, ग्रंथ साहिब क्या कह रहा है? यू सी बैकबाइटर ये बहुत लोड उठाता है गुनाहों का. एंड ही कैरीज लोड्स विदाउट, और दूसरों के लोड्स उठाता है बट विदाउट पेमेंट. मिसाल की यू सी बैकबाइटर जस्ट लाइक अ लेबर, मगर काम तो करता है दूसरों के लिए, मगर पेमेंट नहीं मिलती है उससे. इसको इस पर बिगड़ करा. इतना बड़ा है गुना ये बैकबाइटिंग. ये सिखिज्म में कंसिडर किया गया है. अब बुद्धिज्म क्या कर रहा है? लॉर्ड बुद्धा इन हिज 8-fold path says that one requires living a life based on right speech. एक इंसान को अपनी जिंदगी की बुनियाद सच्चाई पर रखनी चाहिए. This is what Lord Buddha says. And now question number 4. Why did the servant of Rabbi Simon bring tongues both the times? ये जो रबी सिमन है उसने दोनों ओकेजन्स पर टंगस क्यों लाई? क्योंकि उसको एक एहसास देना था, उसको एक लेसन देनी थी कि यस, ये हमारी दिस इज only tongue can do both good as well as bad to others. देखिए, और अभी से मैंने servant brings tongues both the times because it is only the tongue that shows the good and bad. इसी जबान से हम अच्छा कलाम भी निकालते हैं और गलत भी निकालते हैं. Also there is nothing better than a good tongue and nothing worse. और अगर if we are able to use our tongue properly, that means इससे मीठी, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है. But if we don't control our tongue, if we don't use our tongue properly, तो इससे वर्ष भी कोई नहीं है. तो क्वेश्चन इसके बाद, what according to you is the moral of the lesson? अब आपके ये बोल अब why did Rabbi Simon invite his? इसने इनवाइट क्यों किया अपने डिसिपल्स को? ये भी आपने देखा. इसको भी उन्हें बोलना था कि हाँ देखिए, जब इसके रबी सिमन के डिसिपल्स हैं, उन्होंने सॉफ्ट टंग चूज की, उन्होंने हार्ड टंग को टच भी नहीं किया, तो फिर इसने उनको एक लेसन दी कि we must always use soft words, we must always use soft tongue for others. देखिए, Rabbi Simon invited disciples for a meal to tell them about the advantage of soft tongue. ये उनको एक एडवांटेज बताना चाहता था. अब और एक क्वेश्चन है, हाँ, what according to you is the moral? आपके मुताबिक इस लेसन का मॉरल क्या हो सकता है? आप एक बात याद रखिए कि हमें यही मॉरल रखना है. Being a Muslim, we have to consider that, we have to remember that the moral of the lesson should be that we must not indulge ourselves in backbiting. That is the only way to purify ourselves, to purify our heart. वही एक मकसद है, वही एक तरीका है हम अपने दिल को, क्योंकि ये जो बैकबाइट ऑटोमेटिकली जो बैकबाइटर होगा उसके दिल में बुग़्ज़ भी हो सकता है. तो क्या बोल रहा है?
Vice offends the moral standards of the community, and scandal mongering and backbiting are vices. We should always refrain from this so that to be pure in front of. हमें हमेशा स्कैंडल मॉन्गरिंग से दूर रहना चाहिए. हमें हमेशा इन बैकबाइटिंग से हमेशा दूर रहना चाहिए. गैस यही एक तरीका है कि हम अल्लाह के सामने सर उठा कर बैठ सकते हैं. हम अल्लाह के सामने बता सकते हैं कि नो, वी हैव नेवर बीन इंडल्ज्ड इन सच एक्टिविटीज, इन सच इवल एक्टिविटीज में हमने कभी भी शामिल हम नहीं हुए. तो ये इसका आंसर है, यही इसकी मॉरल है. क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन आई टोल्ड यू दैट बीइंग अ मुस्लिम वी मस्ट कंसिडर दिस लेसन एज अ फ्रूटफुल लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. क्योंकि इसमें हमने देखा कि बैक बाइटिंग कितना गुनाह है. हमने ये भी देखा कि एक सहाबी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं कि उसने दुआ पूछी, ओ अल्लाह, क्या मांगा? ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज फ्रॉम द सिन ऑफ माई आईज, फ्रॉम द सिन ऑफ माई ईयर्स, फ्रॉम द सिन ऑफ माई टंग. कितना तो ये जो टंग है, ये अथवा शमशेर ऐसी कैज वर्ड्स वन स्पोकन कैन नेवर बी टेकन बैक. जब हमने कोई वर्ड इस्तेमाल किया उसको हम दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं. तो दैट इज वाई कि ये एक लेसन है हमारे लिए कि पहले तोलो फिर बोलो. एक बेपैज ना एस्पन पान बैक बाइटिंग में नेवर, डोंट एवर इंडल्ज इन बैक बाइटिंग. ये बहुत बड़ा गुनाह है. हाउ डज आवर टंग डू गुड और बैड टू अदर्स? A good tongue pleases people and makes. एक सही जबान, अच्छी जबान, मीठी जबान दूसरों को खुश कर सकती है, दूसरों को हैप्पी बना सकती है. बट एंड अ बैड टंग ऑफेंड्स देम. और ये जो बैड टंग है, हार्श वर्ड्स, इफ वी यूज हार्श वर्ड्स अगेंस्ट अदर्स, तो ये उनको हर्ट कर सकती हैं, ये उनको शर्मिंदा कर सकती है, विच इज ग्रेट सिन. और जो मैंने पहले भी बोला, जो बहुत बड़ा गुनाह है हर एक मजहब में. These were the 7 questions you need to write them. दूसरी बात, आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका. तो दूसरी बात ये कि अब हमारा इसका लैंग्वेज वर्क, लेकिन लैंग्वेज वर्क हम बाद में देखेंगे. बट बिफोर गोइंग ऑन द लैंग्वेज वर्क, यू हैव रेड दिस प्रीफिक्स एंड सुफिक्स ऑलमोस्ट 3 or 4 years बैक. आपने 3-4 साल पहले प्रीफिक्स सुफिक्स का पढ़ा है. प्रीफिक्स का हमने देखा कि when we add any syllable in the beginning of any word, और syllable का भी आप लोगों को पता है कि syllable doesn't mean कि हम वर्ड, ये कंपाउंड वर्ड की तरह नहीं है कि हम 2 वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनाते हैं. नो, syllable का मतलब है एक आवाज ऐड करना. एक जब हम किसी वर्ड को आगाज में, मिसाल फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वर्ड ऑनेस्ट, if we add dis itself is not a word, it's only a syllable, it's only a sound. ये एक आवाज है. This, when we added dis in the beginning of this honest, the word honest completely changes, it becomes dishonest. This is the use of prefix. For example, literate, literate, illiterate, तालीम याफ्ता, पढ़. But when we add il to it, ill in the beginning of it, the meaning of literate changes and it becomes illiterate. These are the prefixes. That means when we add any sound, ill itself is not a word, it is only a sound. Ill. तो जब हम साउंड करते हैं ऐड किसको, वर्ड्स के बिगिनिंग में, वो बन जाते हैं. These are known as prefixes. तो दूसरा हमने ये भी देखा है कि suffix means when we add any syllable in the end of any word. जब हम कोई syllable, कोई आवाज, let me repeat it once again for you, only sound हम ऐड करते हैं. When we add any sound at the end of any word, the meaning of the word changes, and that is what suffixes are. For example, smoke, 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 but when we add r to it, it becomes smoker. For example, loyal, 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 but when we add ity to it, it becomes loyalty. Ity is not itself a word, it's not a word, it's only a sound. That means I add a syllable in the end of it, and when I add this syllable in the end of this word, the meaning of the word as well as word changes, it becomes loyalty. This is suffix. तो इस लेसन में हमें एक तो प्रीफिक्स सुफिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है, और दूसरा
हमने इसमें ये भी पढ़ना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब्स क्या है, और इंशाल्लाह वी हैव ऑलरेडी रेड दीज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, लेकिन इंशाल्लाह हम कल वो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। तो इंशाल्लाह आई होप कि वट एवर वी रेड you would remember, moreover you will adopt it in your lives। तो तब जाकर हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। तो आखिर पर मेरी यही नसीहत होती है कि confine yourself to your homes, give more and more time to your studies, don't run away from your homes। भागने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर में रहो, अपने किताब के साथ, अपने सिलेबस के साथ, अपने पढ़ाई के साथ कंसंट्रेट करो। बस वही एक मकसद है हमारा, पढ़ना। हमारा मकसद पढ़ाना है, आपका मकसद पढ़ना है। बस जब हम दोनों हम टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट जब भी मिलकर ये काम करेंगे तब हमारा मिशन कामयाब है। इंशाल्लाह यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से निकाले। बाकी शुक्रिया, खुदा हाफिज़, और हम इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे।